Om Shanti. Om Shanti. Respected Chief Justice of Telangana High Court, respected Brother Sudhir Kumar, and Senior Advocate at the Supreme Court, I forget the name, and our dear brother, yes, I remember you as a great grandson of the Nizam. And my dear brothers and sisters seated in front of me, my very dear sister Kuldeep Ben, who I know from my childhood. We are friends when we were very small, young, and we have known each other for so long, grown together. We have been nurtured together by our dadis, and we have been taught this life together by the chief dadis at Mount Abu. The topic this morning, and especially for administrators, our brother was asking me, sister, what is the speciality of this program? Why this program and this topic? To tell you frankly, when I was sitting there, I recalled one of the versions of the Almighty, the lessons that we get. In one of the lessons, he said, एक होता है दिल का प्रभाव, दिल को आप छूते हैं, और एक होता है जो दिमाग को आप छूते हैं. One thing is that you touch the hearts of the people, and the other thing is where intellectually you are very strong and intellectually you are able to touch the minds, the intellect of the people. Which is greater? दोनों में अच्छा कौन सा है? बताइए. दिल को कोई बात छू जाए और दिमाग को छू जाए, दोनों में अच्छा कौन सा है? एक स्टेप अच्छा कौन सा है? दिल को छू जाए. कितने कहते हैं दिल को छू जाए? मेजॉरिटी. यही बात है. इफेक्टिवनेस इसका ही नाम है. आज हम लोग कितनी मेहनत करते हैं अपने साथियों को, अपनी टीम को कितनी प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं. लीडरशिप पर, वर्क कल्चर पर कितनी प्रकार की ट्रेनिंग्स देते हैं. सब ऑफिशियल इंटेलेक्चुअल जार्गन, और एक सेंटेंस में हम सर्टिफिकेट दे देते हैं कि भाई बातें तो बहुत अच्छी कही थी, सुनाया बहुत अच्छा, लेकिन करेगा कौन?
होगा कैसे, संभव नहीं है, आदि आदि। जो चीज हम इस ऑर्गेनाइजेशन में सीखते हैं, हमें लेक्चर्स देने नहीं आते। हमारी दादियों को कोई इस तरीके के, जो वर्तमान समय के लोग अच्छे स्पीकर्स हैं, उस लेवल के वो लेक्चर्स नहीं देते। और हम लोग स्वयं भी कहा करते थे, वी यूज्ड टू से व्हेन देयर यूज्ड टू बी लेक्चर्स, sisters are speaking, brothers are speaking from the same stage, and dadis are speaking. Dadis used to speak for 2 minutes, 3 minutes, but they used to throb the hearts of the people. And we were speaking for 15 minutes, 20 minutes. Still that effect was not there as it was with the dadis. What made the difference? Intellectual jargon is no more needed, let me tell you. We can make out nice lectures, but effectiveness comes only when it comes from inside. When you work from inside, when you speak from inside, when you relate with a person from inside, when you communicate with the person from inside. Handshake, good morning, just formality, no. I recall our past president, the late Dr. Abdul Kalam ji. We were in his office. We had invited him to Mount Abu, and he had accepted, he came. But he introduced us to his secretary. And you know how he introduced him? He said, "Sister, he is the pillar of my office. He is the pillar of my office." And that gentleman was not a very big person. I knew him. He was working with Dr. Abdul Kalam when he was working as a scientist in Hyderabad. But when he said so, it touched my heart. This is the way to appreciate your own people. And I know, दौड़ के वो भाई काम करता था, दिन रात काम करता था, और एक्यूरेट जो चाहिए वो करता था. क्यों? Because the boss had created a space in his heart. This is effectiveness. Very easy to order my juniors and my companions, do this, do this, do this. No. Recognizing the worth of human personality, appreciating the worth of human personality. Is it possible for you to help me out with this? How much difference does it make? The first would say, I will see, let's see. But if you want to be more effective, please, brothers and sisters, experience that we have learned from our seniors, dadis, is be humble, humility, and build trust. Win the hearts of your people,
build trust. When you build trust in them, then they will be effective and you will be also effective. Because effectiveness means, and it emerges when you are free of the garbage that we keep in our minds. I'm harsh to say, harsh to make use of the word garbage. By garbage I mean assumptions, idiosyncrasies, my whims and fancies, my leanings, addictions, my impressions. This is garbage. I cannot be effective if I carry this garbage here. I have to be effective, which means I have to free myself of all this. Try to see the things as they are. If my mind is conditioned, if I hold certain assumptions, I cannot be my natural self. And when I am not my natural self, I cannot be effective. In order to be natural self, I have to free myself of all these things. When I recognize and see the things as they are, without adding anything to it, see the things as they are, then I can be just, I can be neutral, and I can be working as a trustee. Trustee simply means performing the work without owning anything. If I own something, again, effectiveness is affected. Hence, one concept that has been given to us by our spiritual leaders for centuries together, embedded in Srimad Bhagavad Gita, and that is, be a trustee. Anasakt, detached. When you work as a karam yogi, not as workaholic, I do not mean karam yogi a workaholic. Karam yogi has full control over his work and keeps a good balance of karma and yoga. When this balance is there, which means balancing my mind, intellect and actions, balancing my qualities of humility and authority, love and law, having total balance in life, there is no special झुकना, special जब आप झुक जाते हैं किसी तरफ, when you bend towards something more, naturally it is affected. Hence, the seat of a karma yogi is that of a trustee. If you work like a trustee, it is not me, Karan Karabanhar. He has given me this duty to perform. And when I am not duty conscious, but it is the work given to me by Him, the Almighty God. If I love someone,
and he or she gives me some work. How do I work? With full attention, with full love, full care, everything that is needed to be effective enters into it. Similarly, it is essential when I am a karma yogi, I have the seat of a trustee and perform my duty as though it has been given to me by God the Almighty. Naturally, there will enter love, trust, faith, and so on. Another thing which I give importance and I feel it is very effective, be very simple. It is very easy to make simple things complicated. But dear brothers and sisters, very hard to make difficult things simple. Simplicity, and to be very complicated, complex, this is not effectiveness. It takes you to a jungle of thoughts, forest of thoughts, where you keep thinking as to what to do and what not. Instead, when you are simple, you are straightforward. When you are straightforward, things are understood by the people easily. When it is understood by the people and you are also very straightforward, it is more effective. People understand properly and perform properly. Similarly, there is something in spiritual technology, we call it intuition. Dear brothers and sisters, there is no training school in the world which will teach you how to build your intuition. In fact, all of us are very intuitive. But what happens is we do not give it an opportunity to appear. Here, I would say, give silence a chance. Give silence a chance. And in our organization, we give lot and lot of importance to silence. You would be observing, before we start the program, we are in silence. Anyone who comes here to speak stands in silence, because silence, it makes you streamline. And in silence, the beautiful thoughts, the intuitive power that is there inside you, everyone, it starts appearing. More you remain in silence. If you want to be effective, give silence an opportunity. Give silence a little chance. And then, is it possible to keep our people motivated? Nowadays, we talk of sustainability. Certain things are learned, but then forgotten also very fast because we do not sustain them. And it is a problem all over. How nice it is if we are able to keep our people motivated always. And how do we do that? Sitting with them, talking to them, so that the talent that is there inside them is allowed to grow. When you allow your people's talent to grow, this itself is a motivating factor for them, makes them more effective. Why is it? Dear brothers and sisters, you know pretty well. I do not know about Andhra and Telangana much,
But definitely in Delhi, I know people like to take things very easy. हो जाएगा, कर लेंगे, अभी कौन सी जल्दी है, आज ही तो फाइल आई है, एक हफ्ता तो पड़े रहने दो, उसके बाद देख लें. नो मोटिवेशन. अगर ये मोटिवेशन इनोवेशंस को भी जन्म देता है. और इनोवेशंस कोई बड़े एक्सपीरियंस लोगों से ही नहीं आती हैं. They can come from very young people also. So if equal attention is given to them and we are encouraging them, this also helps a lot in building effectiveness. Believe in yourself. मैं कुछ नहीं कर सकती. I remember I was traveling in Brazil, and in the morning I was conducting class. I found the whole class was very happy, but there was one person sitting by the door side, and my attention went there, and I found he was not at all happy. Nothing. No smile, nothing, dull, dead like. I made it a point to talk to him after the class. I called him. I said, brother, is something wrong with you? He said, yes, sister. I am not good for this world. I said, why? He said, I don't drink. I don't go out, I don't take alcohol, I don't take this, I don't do this. This world is not meant for me and I am not meant for this world. I said, you are a great contributor to this world. Little encouragement. And today that person is in charge of one of our big centers in Brazil. What? Why I narrated this? It has nothing to do with effectiveness. क्या हम अपने साथियों से कभी मिल के बैठ के प्यार से बात करते हैं? उनका दिल कभी पूछते हैं? आप थोड़ा सा ही करके देखिए, आपको अंतर पता लगेगा. लॉट ऑफ डिफरेंस. इसके साथ साथ जो चीज मैं बहुत उसको जोर देती हूँ, क्रिएट क्रेडिबिलिटी. क्रिएट क्रेडिबिलिटी. लोग आप में विश्वास रखें, लोग आपको उस स्तर का माने. हाँ, अगर ये बात यहाँ से आई है, ये होगी. वो हम अपना स्टैंडर्ड, ये बात अगर सो एंड सो ने कही है तो ये परफेक्टली होगी. ये जो चीज़ है बहुत फेथ, ट्रस्ट पैदा करती है, जिससे व्यक्ति कोई भी कार्य करने में हिचकिचाता नहीं है और फॉरवर्ड आता है. नहीं तो कहते कौन करेगा, कौन करेगा. सो क्रिएट क्रेडिबिलिटी एंड देन बी रिस्पेक्टफुल. बी रिस्पेक्टफुल. आपने कभी देखा जब बच्चा बड़ा हो जाता है, आप कभी उसको थोड़ा सा जोर से बोलते हैं, बच्चा क्या कहता है? माँ, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया. हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं मेरे जूनियर हैं, लेकिन अपने फील्ड में तो वो बड़े हैं, अपनी फैमिली के तो वो हेड हैं. उनकी थिंकिंग, उनकी वैल्यू सिस्टम,
उनकी पर्सनालिटी, उनकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या मैं उनका ध्यान रखती हूँ? अगर मैं किसी को जोर से शाउट कर देती हूँ, क्या कभी सोचती हूँ इसके बच्चे इसके सामने हो तो कैसा होगा? बी रिस्पेक्टफुल. We are not alone. We cannot work alone. हमें अपने साथियों के साथ ही काम करना है. और अगर मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, वो रिस्पेक्ट अगर मैंने नहीं दी, कहीं ना कहीं वो चीज़ उभर के आएगी और नुकसान देगी. इसके साथ बीच बीच में कभी कभी अप्रिशिएट कर लीजिए, जिसको मैं कहना चाहूँगी, मेक एम्प्लॉय रिकग्निशन योर रिचुअल. क्या ही अच्छा हो इसको किसी चीज़ से हम आइडेंटिफाई करें, किसी को किसी गुण से आइडेंटिफाई, किसी वैल्यू से आइडेंटिफाई करें. वो व्यक्ति अपनी जिंदगी की कदर जानेगा तो अपना व्यवहार भी करेगा. इसके साथ साथ जो गिविंग की बात कही हमारे भाई ने, गिवर, बी ए गिवर. जब आप किसी को कोई चीज़ देते हैं तो देने में खुशी है, लेते हैं तो बोझ है. मैंने देना है. मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी, मुझे बहुत प्रिय लगती है और मैं ज़्यादातर उसको कहती हूँ. 2 छोटे बच्चे थे और उनको उनके टीचर ने बास्केट फुल ऑफ रोजेस दिए और कहा, बेटा, हैदराबाद में जो आपको मुस्कुराता हुआ व्यक्ति मिले उसको 1 रोज़ दे देना. तो एक बच्चा शाम को वापस आ गया, बास्केट फुल ऑफ रोजेस. टीचर ने कहा, क्यों बेटा, तुमको कोई भी नहीं मिला मुस्कुराता हुआ? उसने कहा, सर नहीं, हैदराबाद में लोग इतने वर्क कॉन्शियस हैं, सब दौड़ते भागते रहते हैं, किसी को कोई फुर्सत नहीं है, किसी को कोई नहीं देखता, हैदराबाद में कोई मुस्कुराता ही नहीं है. टीचर ने बोला, ऐसा? थोड़ी देर में दूसरा बच्चा आया, उसकी सारी बास्केट खाली. टीचर ने कहा, ऐसा कैसे? उसका 1 फूल नहीं गया और तुम्हारे सारे फूल चले गए. तुम हिमायत सागर में फूल गिरा के आए? बोला, नहीं सर, आपने हिमायत सागर में डालने को नहीं बोला था, आपने कहा था जो मुस्कुराए उसको देना. तो मैंने देखा कोई मुस्कुरा नहीं रहा है, तो मैं खुद गया सामने एक व्यक्ति के, उसको देखा, मुस्कुराया. जब मैं मुस्कुराया तो वो भी मुस्कुरा पड़ा, मैंने उसको फूल दे दिया. इफेक्टिवनेस. कदम पहला मुझे लेना है. एंड ऑल ऑफ अस हैव समथिंग टू गिव. इफ नॉट एनीथिंग, अ स्माइल. स्माइल तो हो सकती है ना, वो अगर हम दें, स्माइल से you are not moving your lips, but you are sending good vibrations, loving vibrations. ये चीज़ उन बच्चों को, लोगों को प्रिय लगती है. आपने कभी देखा, स्कूल के बच्चे जाते हैं बस में, आपकी गाड़ी उनके पीछे है, बच्चे आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, गुड बाय करते हुए जाते हैं. व्हाट इज इट? एंड यू फील सो हैप्पी. और अगर कोई मैच्योर पर्सन ऐसा करे तो आप कहेंगे, अरे इसको क्या हो गया है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? तो फर्क है. इनोसेंस विथ फर्स्ट स्टेप ऑफ स्माइल गिविंग. और इसके साथ मैं कहूँगी, अपनी सारी ही जो
डिसीशंस हैं, अगर हम उन डिसीशंस में पार्टिसिपेट करते हुए, डिसीशंस देते हुए, न काहू से दोस्ती न काहू से वैर, फर्म एंड फेयर डिसीशंस होते हैं, इससे भी इफेक्टिवनेस खुद की भी बढ़ती है और साथ साथ जो अपने साथी एटमॉस्फेयर, उसमें भी वो चीज़ आती है। लास्ट, इन सब चीज़ों के लिए आज जो चीज़ बहुत ज़रूरी हम सब समझ रहे हैं, देखिए अभी लास्ट 3 दिन पहले एक बहुत हाई प्रोफेशनल आईटी ऑफिसर क्या कहती है, मैं समझ गई हूँ ना दुनिया में धन चाहिए, न दुनिया में ऐश आराम चाहिए, न दुनिया में कुछ और चाहिए, मेंटल हेल्थ चाहिए। और ये बात मैं आपको लेटेस्ट जो WHO के आंकड़े उस आधार से भी कह रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड हैविंग हैप्पीनेस उत्सव, हैप्पीनेस मिनिस्ट्रीज। क्या हो गया हमको, क्या हो गया? आप हैप्पीनेस किसी को दे सकते हैं? यू कैन नॉट, इट हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड। आप खुद जनरेट करेंगे। उसके लिए मेंटल हेल्थ पर अटेंशन देना है, और मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी चीज़ है कि हम मेडिटेशन के ऊपर अटेंशन दें। मेडिटेशन connects you with the self, meditation connects you with the supreme, meditation connects you with the people। और जहाँ ये 3 चीज़ होंगी, वहाँ आपकी लाइफ खुशहाल, खुशनुमा, खुशदाई, सबको सुख देने वाली बन सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ। ओम शांति।